सिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। उड़ीसा राज्य स्थित पुरी धाम से दूरदर्शन की ओर से हम सभी आपसे मुखातिब हैं। यह बड़दंड का दृश्य आपके सामने, बड़दंड यानी कि ग्रैंड रोड, और इस सड़क पर ये जो मुख्य धारा है, ये जो लोगों का प्रवाह आपको दिखलाई पड़ रहा है, यह रथ यात्रा का एक विशेष महोत्सव और ख़ास तौर से नवकलेवर का एक अद्भुत महोत्सव 2015 का। रथ यात्रा एक संबंध पर्व है, महोत्सव है आध्यात्मिक और लौकिक के मिलन बिंदु का। एक ऐसा अवसर है जब परमात्मा जीव से मिलने के लिए अपनी रत्न वेदी का त्याग करते हैं। ब्रह्म की करुण कातरता और भक्तों की प्रतीक्षा के इस अनूठे पर्व पर आज 18 जुलाई 2015 की सुबह आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। उड़ीसा राज्य स्थित जो ये पुरी धाम है, जिसके श्री मंदिर का दृश्य आप सब लोग देख पा रहे हैं, उसके पास में ही है दूरदर्शन का हमारा कमेंटेटर्स बॉक्स, जिसमें बैठे अपने साथियों सर्वश्री सुभाष पाणी, अशोक पांडे, सरोज देव भंज, प्रमोद चंद्र मिश्र और डॉक्टर वेदुला राम लक्ष्मी के साथ मैं शुभेंदु अमिताभ आप सबको इस पावन रथ यात्रा और नवकलेवर की शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष की रथ यात्रा विशेष है, विशिष्ट महात्म्य वाली है, क्योंकि इस सदी का ये पहला नवकलेवर वर्ष है। सरल भाषा में कहें तो नव यानी नया और कलेवर यानी काया, ये चतुर्धा विग्रहों के नवीन कलेवर का वर्ष है। नव कलेवर को घट परिवर्तन या ब्रह्म परिवर्तन भी कहते हैं। वैसे नवकलेवर का अर्थ यह भी हो सकता है कि जिसका कलेवर सर्वथा नवीन हो, यानी जितनी बार देखो नव्यता नूतनता का अनुभव हो। जिसे कहा है क्षणे क्षणे हिन्नवती नुपैती तदेव रूपम रमणीयता, हर क्षण जो आंखों को रमणीय लगे, सुंदर लगे, वही वस्तुतः सुंदर है। नवकलेवर के बारे में बहुत से लोगों के हृदय में ये प्रश्न रहता है कि नवकलेवर कितनी बार होता है, कब होता है। तो सरल भाषा में एक बार फिर आपसे अर्ज करूं कि जब भी वर्ष में 2 आषाढ़ होते हैं, यानी पुरुषोत्तम मास या मलमास भी जिसे कहते हैं, जब भी होता है उस वर्ष नवकलेवर होता है। 20वीं शताब्दी में 6 बार नवकलेवर हुए हैं। पिछले 2 जो हुए वे हुए 1977 और 1996 में, और यह है इस वर्ष के नवकलेवर के बाद की रथ यात्रा का आपके सामने दृश्य। दरअसल हमारी जो पृथ्वी है इसे मर्त्यलोक कहा गया है, यानी जो भी आया है उसका जाना तय है। मृत्यु अवश्यम भावी। मर्त्यलोक के नियमों के अनुसार संभवतः इसीलिए जगन्नाथ यानी जगत के नाथ भी मर्त्य लीला करते हैं। यहाँ हर एक वस्तु की आयु निर्धारित है, यहाँ तक कि अष्टविध प्रतिमाओं की। इसीलिए महाप्रभु के दारवी तनु का परिवर्तन शास्त्र एवं लोक सम्मत। यहाँ आपके सामने जो नृत्य दिखलाई पड़ रहा है आपको, ये गोट्टी पुआ का वो पौराणिक नृत्य है जो कि महाप्रभु जगन्नाथ की जो यह रथ यात्रा होती है पुरी में, उत्कल धाम में, जिसे श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र, बहुत से कई नामों से जाना जाता है। उस अवसर पर इस गोट्टी पुआ का प्रदर्शन होता है, ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन होता है, और अपनी श्रद्धा, अपने उल्लास, अपनी भक्ति के साथ जगह जगह से आए हुए भक्त लोग अपने भावों को व्यक्त करते हैं। लोकाचार और जगन्नाथ संस्कृति में
तरह तरह की बातें हैं जो कहीं कहीं कॉमन दिखती हैं, यानी साम्यता दिखती है, और कहीं कहीं बड़ा अद्भुत और बड़ा रोचक विरोधाभास भी दिखलाई पड़ता है। आम जीवन में तो महायात्रा जब होती है तो उसे हम अंतिम यात्रा कहते हैं, लेकिन जगन्नाथ संस्कृति में नव यौवन दर्शन के बाद रथ यात्रा होती है, जैसे हर अंत एक नई शुरुआत, एक नया सोपान हो, नूतन आरंभ का। मर्त्यलोक में जहाँ हर वस्तु जीव की आयु है, प्रस्तर प्रतिमा, मणिमय मूर्ति से लेकर मिट्टी की मूर्ति और काष्ठ लकड़ी की प्रतिमा की आयु भी तय है। इसीलिए काष्ठ मूर्ति का परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन ब्रह्म तो अपरिवर्तित है, वे मात्र घट बदलते हैं। फिलॉसफी ऑफ रीबर्थ यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन महाप्रभु तो दारू ब्रह्म है, मात्र एक काष्ठ विग्रह नहीं। लेकिन मर्त्यलोक में अवतरण के कारण वे यहाँ की मर्यादाओं का जैसे पालन करते हैं, घट परिवर्तन करते हैं, मानवीय लीला में साथ देते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ का जो श्री मंदिर है, उसका मुख्य सिंह द्वार इस समय आपके सामने है। ऊपर थी लक्ष्मी की प्रतिमा और नीचे ये सिंह द्वार है, जहाँ से अब से थोड़ी देर पहले पहुंचनी शुरू हो गई है भगवान श्री सुदर्शन की। उससे पहले यहाँ की परंपरा के अनुसार रथों के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और उसके उस शुचिकरण के बाद सुदर्शन जी की पहुंचनी हो चुकी है। यहाँ इस वक्त आपके सामने श्रद्धा और समर्पण की रंगोली भक्तों द्वारा की जा रही है। श्रद्धा समर्पण की जो ये रंगोली है, इन भक्तों को आवेदन देकर या निमंत्रण देकर नहीं बुलाया जाता, ये खुद ब खुद श्रद्धा से यहाँ आते हैं। और भारत के विविध प्रांतों से कई बार ऐसा भी अनुभव हुआ है कि हमें और आपको ये पता न चल सके कि ये आर्टिस्ट, ये कलाकार है कौन, कहाँ से आया, भारत के किस प्रांत से आया, लेकिन उसने अपने को गलाकर अपनी प्रतिभा, अपनी श्रद्धा से इस बड़ दंड पर, इस महायात्रा में, महाप्रभु जगन्नाथ को समर्पित इस यात्रा में उसने अपने हाथों से वो कारीगरी की जो हम सबके सामने सामने मंदिर का दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। नील छत्र और उसके ऊपर पतित पावन बाना, जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि पापों का क्षय होता है। नील चक्र जो ऊपर दिखलाई पड़ रहा है, ये सुदर्शन का प्रतीक है, अष्टधातु से निर्मित होता है। और ये जो सुदर्शन है, इनके जो प्रतीक हैं, ये महाप्रभु के आयुध। पतित पावन बाना महाप्रभु के श्री मंदिर के जो ऊपर लगा है, इसके ध्वजारोहण की पद्धति आपको बताऊं बड़ी रोचक और अनूठी है। जब भी इस बाना को ऊपर लगाया जाता है या बदला जाता है, मंदिर प्रांगण के भीतर जो जमा भक्तगण होते हैं, वे अपलक भाव से सेवायतों को ऊपर चढ़ते उतरते देखते हैं। और कई सेवायत इतने ऊंचे मंदिर पर जब चढ़कर बदलते हैं, बहुत से उसमें इतने छोटे, इतनी कम उम्र के तरुण होते हैं कि देखकर बड़ा ही आश्चर्य और बड़ी रोचकता का, बड़े रोमांच का अनुभव होता है। नवकलेवर जीव आत्मा जड़ चेतन की यात्रा का जैसे वृत्तांत। महावृक्ष जो नीम का होता है, उसके कटने के बाद वो जड़ हो जाता है, लेकिन पुनः नवकलेवर के बाद चेतन। फिर जब भी वर्ष में 2 आषाढ़ होते हैं, नवकलेवर की बारी आती है और एक बार फिर वही चेतन फिर से पाताल लीला में चले जाते हैं, एक और अन्य काया शरीर में जाने के बाद। यानी यह जड़ चेतन शरीर आत्मा का ही उलट फेर है। जड़ चेतन का जैसे परिभ्रमण है, नवकलेवर यही अनवरत अनहद नाद है, जो 1000 से भी अधिक वर्षों की हमारी परंपरा का अद्भुत उदात्त आईना है। यहाँ आपके सामने भक्तजन ओडिसी, गोट्टीपुआ नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए, ये सब वो श्रद्धालु हैं। और यहाँ आपको बता दूं कि पुरी में गोट्टीपुआ और ओडिसी नृत्य से संबंधित कई ऐसे विद्यालय चलते हैं जहाँ इन भक्तों को शिक्षा मिलती है। और ये लोग आज के दिन जब रथ यात्रा होती है हर साल, उस दिन ये अपनी इस कला का प्रदर्शन करते हैं। और इस पूरी लगभग 1000 वर्ष पुरानी परंपरा में आपको और हमको एक साथ डुबोते उतारते हैं। जहाँ तक भगवान श्री जगन्नाथ और बाकी विग्रहों का प्रश्न है, ये सभी विग्रह काठ के होते हैं, यानी दारू ब्रह्म है। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में कहते हैं, यद ब्रह्म तदैव दारू, यद दारू तदैव ब्रह्म। सहर्ष शीर्ष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद होते हुए भी विराट यानी जगत के नाथ जगन्नाथ अपने अलौकिक रूप को भक्तों के लिए जैसे दारवी तनु में सीमित कर लेते हैं।
दारु ब्रह्म यानी दुखों का विदारण करने वाले महाप्रभु, दारु ब्रह्म यानी दारुण से दारुण दुखों का को हरने वाले महाप्रभु जगन्नाथ की यह रथ यात्रा, और इस अवसर पर, इस विशेष अवसर पर, खासतौर से इसलिए क्योंकि इस सदी के पहले नवकलेवर के अवसर पर हो रही जो ये रथ यात्रा है, इस अवसर पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और ये कहना चाहूंगा कि भारतीय चिंतकों ने कहा है कि मधुमास वत्रुमा, जैसे वसंत आने पर पुराने पेड़ भी फिर से नए हो जाते हैं, प्रकृति का सारा वातावरण बदल जाता है, उसी प्रकार भगवान का विग्रह, उनकी छवि भी नूतन स्वरूप धारण करती है। भारतीय चिंतन आशावाद का रहा है, इसीलिए हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आज दुख है तो क्या हुआ, कभी न कभी हमें सुख मिलेगा, चाहे इहलोक में या परलोक। शायद इसी आशावाद के कारण हमारी कहानियां भी ट्रेजेडी प्रधान नहीं है। हमारे यहाँ आनंदवाद की प्रतिष्ठा है, आनंदवाद की परंपरा है। भगवद गीता के अनुसार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयति नवानि दे। हम जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने या जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। संत विनोबा भावे ने इसी यानी गीता के दूसरे अध्याय के इस 22वें श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा कि वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा शरीर 7 वर्षों में पूरा का पूरा बदल जाता है, एक बूंद खून भी पुराना नहीं रहता हमारे शरीर। और भारतीय वांग्मय में तो 12 वर्षों के प्रायश्चित, 12 वर्षों की तपश्चर्या, 12 वर्षों के ब्रह्मचर्य का विधान है, पढ़ाई का, अध्ययन का विधान है, गुरुकुल में जाने का विधान है, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। और शायद यही वजह है कि काष्ठ के जो दारू हैं, दुखों का विदारण करने वाले जो दारू ब्रह्म है, वह इस समय यानी नवकलेवर वर्ष में पुरुषोत्तम मास में फिर से एक नए घट को, एक नए शरीर को धारण करते हैं। जल में रहकर भी दारू की प्रकृति ऊपर तैरते रहने की होती है, वैसे ही जैसे कमल का पत्ता, पद्म पत्र जल से प्रभावित नहीं होता। हमारे सामने इस वक्त अरुण स्तंभ है, इसके जो डेटी हैं यानी जो ईश्वर है अरुण यानी सूर्य, इसकी ऊंचाई 25 फीट 2 इंच है और इसका जो घेरा है, जो पेरीमीटर है, वो 6 फीट 3 इंच की। मैं आपसे कह रहा था कि जैसे जल में रहकर भी दारू की प्रकृति ऊपर तैरने की है, जैसे कमल का पत्ता, पद्म पत्र जल से प्रभावित नहीं होता, और वैसे भी नारायण शब्द में जो नार शब्द है वो जल का वाचक है, यानी क्षीर सागर में रहकर भी उस पर तिरोहित होते तैरते नारायण का दारू स्वरूप। इसलिए संभवतः दारू ब्रह्म की उपासना और दारू ब्रह्म का अनुमोदन किया गया होगा अब से लगभग 1000 वर्ष पहले या उससे भी पहले। मंदिर की जो आयु बताते हैं लोग, यानी मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसको हुए अब लगभग 1000 वर्ष या हो सकता है उससे ज्यादा हो गए हों। रथ यात्रा की जो ये परंपरा है उसको भी लगभग 1000 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। और यहाँ पर जो बड़दंड पर आप जो ये इतना बड़ा मानव महासमुद्र आपको भी दिखलाई पड़ रहा था, यह उसी परंपरा का द्योतक है, उसी परंपरा की एक कड़ी है जिस परंपरा को हमारे पूर्वज देखते आए हैं और जिस परंपरा को यहाँ पुरी धाम में हम सभी आज साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहे हैं और उस आनंद में तिरोहित हो रहे हैं। भगवान का जो ये सिंह द्वार है, आज उसकी विशेष रूप सज्जा की गई है, बनाटी खड़ा और तरह तरह के खेल अभी आपको दिखलाई पड़ेंगे। थोड़ी देर पहले ओडिसी नृत्य, गोटीपुआ नृत्य आपको दिखलाई पड़ा था। और ये फूलों की सज्जा के बारे में मैं कह रहा था, हम अपने साथियों से बातचीत कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें हम सब लोगों ने ये पाया कि आमतौर से हर रथ यात्रा का अपना सौंदर्य, अपनी उसकी छटा होती है, लेकिन जो नवकलेवर वर्ष के समय जो यह रथ यात्रा हो रही है, न सिर्फ इस अवसर पर एक पूरे माहौल में, पूरी जो यहाँ का पूरी प्रदेश का जो पूरा वांग्मय है वो इतना इस समय तरुण है, इतना नूतन है, इतना नव्य है कि उसको शब्दों में उतार पाना बहुत मुश्किल है। सिंहद्वार का दृश्य आपके सामने, महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का यह अवसर है। नवकलेवर यानी नवकलेवर, नई काया, नया शरीर और घट परिवर्तन इसलिए क्योंकि परमात्मा कभी अपने ब्रह्म का कभी अंत नहीं होता, इसलिए वे सिर्फ घट परिवर्तन करते हैं और मर्त्य लोक की मर्यादाओं का जैसे पालन करते हैं। बनाटी खड़ा का यह अद्भुत दृश्य, अरुण स्तंभ आपके सामने, सिंहद्वार का मुख्य दृश्य और मंदिर के विहंगम दृश्य के साथ साथ घंट मर्दल की ध्वनि और आगे का हाल अंग्रेजी में सुनाने करता हूँ अपने साथी सरोज देव भंज को। जय जगन्नाथ।
all glory to Lord Jagannath. There is a saying in the temple that in 12 months there are 24 festivals. And they are the festivals of love and brotherhood. That is the message that the Jagannatha consciousness conveys to the entire universe. That includes the human being, animals and vegetation also. So in that way, 24 high festivals enliven the religious calendar at Puri. These festivals are associated mostly with the memorable events in the life of Lord Rama and Lord Krishna. And Lord Jagannatha is viewed as none other than Lord Rama and Krishna. All incarnations of Vishnu are said to rise from and return to the same source, that is primal divinity, and Lord Jagannatha is that. This is the green foliage around the 10-acre complex that is Jagannath Temple, and the sky is cast with clouds. At the moment the temperature remains at 25 degrees Celsius and 98% humidity is over the city of Puri. And this has added lot of inspiration to the presence of the people that who have gathered here in hundreds and thousands, coming from different corners of the world, not from the local areas but also from all over the world. Lord Jagannatha is considered to be no avatar. He is the avatari, the origin and the source of all avatars. And Puri, as the abode of Lord Jagannatha, is proclaimed to be the Dasavatara Kshetra, a holy place for 10 incarnations of Lord Vishnu. This is the temple complex. All eyes are set onto the exit point towards the right. This is the pathway that comes from the Ananda Bazaar, or the market of happiness. This is the place where the holy food, or the Mahaprasad as it is called, it is shared by everybody. There is no difference of color or even caste. ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହୁଏ ସୁଦର୍ଶନଂ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ବଳଭଦ୍ରଂ ତତଃପରଂ ସୁଭଦ୍ରା च ତतो नीत्वा ଜଗଦୀଶଂ ସୁରେଶ୍ୱରଂ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ରରାଜଙ୍କର ଆୟୁଧ ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପହଣ୍ଡି ହୋଇଛି। ଦଇତା ଏବଂ ପତିମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦାବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ଘଣ୍ଟୁଆ କାହାଳିଆ ବଜନ୍ତରୀ ଓଲାର ଛତାର ପ୍ରମୁଖ ସେବକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ଅତି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବାଜି ଉଠୁଛି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେପଟେ ସମସ୍ତ ସମର କଳା କୌଶଳର ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ସେ ମହାର୍ଘ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିଥିବା ସେହି ଚକ୍ର ବନାଟିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହା କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯେଉଁ ମହାର୍ଘ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଏ ଚକ୍ର ବନାଟି ଏଇ ତ ଦିଶୁଛି ଲାଲ ମାଟିର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜାତିର ଏଥିବ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ, ଶତ ଶହୀଦର ପୁଣ୍ୟ ଶୋଣିତ ବୋଳା ଏ ମାଟି, ଶତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୀର ଏ ମାଟିର ଏଇଠି ଦେଇଛି ବକ୍ର କାଟି। ପାଇକ କିଶୋରୀ ନବ ଯୌବନୀ ସଂଗ୍ରାମେ ଏଠି ସାଜିଛି ସୈନୀ, ପ୍ରିୟରେ କହିଛି ଚାଲ ରଣେ ଚାଲ, ନିଅ ଏ ଖଣ୍ଡା ନିଅ ଏଇ ଢାଲ, କିଭଳି ଏ ଜାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଭୀଷଣତର। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସେଇ ଚକ୍ର ବନାଟି ଯାହାକୁ କି କିଶୋରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ବୁଲାଇବାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ନୃତ୍ୟ ପଟଇଶୀ ମାନେ, ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣା ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିରନ୍ତର ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଆସି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ସତେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ସାତ ପାହାଚ ଦେଇ ସତେ ଯେପରି ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତେ ଯେପରି ଓଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ
अवलोकन करुछंती द्वार लक्ष्मी सिंह द्वार image of Toruna Lakshmi ऊपरे रही सबु किछि को मां तोरण लक्ष्मी ही दर्शन करुछंती सुंदर भावरे सज्जित होइछंती एवं सते जेपरि से प्रतीक्षा करि रहिछंती द्वार लक्ष्मी तोरण लक्ष्मी मां कमला जानको आमे कहे मध्य लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरि प्रिया इंदिरा लोक माता मां हिराब्धी तनया रमा भार्गवी लोक जननी जानको आमे कहे क्षीरसागर कन्या बोली से मां सते जेपरि सबु किछि को दर्शन करुछंती प्रतिटी घटनार सते जेपरि से साक्षी होई रहिछंती सबु किछि को प्रत्यक्ष करी सबु किछि सुचारू रूपे संपादित हेबा पई सते जेपरि तंकर अदृश्य निर्देश very strongly about the Vaishnava tradition. आमे जानु जे पहंडी विजयपुर गुरु तिनिबाड़ रे पूजा पंडा जगत eastern entrance or exit point of the temple, as because two huge stone lions are there standing on the both sides of the entrance. It's called Singha Dwara, and mostly this is for the entry and exit of public. And here from this point begins the grand road or the Bada Danda, and this runs up to the Gundicha Temple, which is the destination of the cow festival and which is the destination of all actions, and the entire length of the grand road or Bada Danda from this point to that is about 3 kilometers, and this is how 3 chariots are parked in the divine protocol. Onto the right, that is the chariot that is draped in yellow and red color. Red is the common color to all the chariots. So yellow, that marks that this is the chariot of Pitambara or Lord Jagannath. And on the left, that is the chariot that belongs to Bada Thakura, or the elder brother, Lord Balabhadra. And in between, in the middle, stands the chariot that is dedicated to Goddess Subhadra. And all the chariots, they have their individual names, they have their individual patterns, they have their individual specifications also. But whatever that is, they are all symbolizing the human existence. And here is a group of Gotipur dancers. In fact, they are not girls, they are dressed in the dress of girls, right from the headgear to the patterns worn on the feet. And this is the exit point of Ananda Bazaar onto the 22 steps. And here the 22 steps are the widest. If we compare them with the other steps, because we have 4 exit points or entry points, there the steps are uneven, and in fact they are difficult for the common people to climb up and down. So that is why most of the devotees, they prefer to get into the temple on this way, and the Pahandi is also done in this way. Otherwise there are 4 other gates also, or doors or entry points. This is facing east, and onto the west there is the Paschima Dwara. It's known as the Baghra Dwara, and particularly it is believed that the occultists or the or those who are practicing Tantra, because Lord Jagannath is viewed as the God who is worshipped in Tantra and Mantra also. So that is the passage for the Tantrics. And onto the northern side there is the Elephant Gate or Hasti Dwara, through which the holy wood were brought from different locations for the carving of the wooden images. And on the top of the procession, just behind the Gotipur dancers, and there are young men also dancing Odissi, because Odissi steppings and the mudras are very different from Gotipur dancing. And if we look at Gotipur dancing, it has not a very long history. It all started from about 16th century during the time of Ramachandra Dev, because in those days different orders of Vaishnavite traditions, and particularly the masters, those who are practicing, they didn't
appreciate and approve of women and girls dancing in public, whether it was a religious festival or any festival. So to have a substitute, so this is how the pahandi is going on, and the tahiya, the tip of the tahiya, or the floral pattern is visible. I shall be talking about that, but let me continue about with the Gotipo dance. And when the Vaishnavite masters, they had objections to the women dancing there. So then Gajapati Ramachandra Dev made an appeal, and particularly the gymnasiums which are located in the Satasahi here. There are 7 settlements. Of course, now they have grown into about 100 settlements. They had very, very old gymnasiums, and there those young boys, those who are about say 8 or 9 years of age, they were inordinate to take up this dancing. And very meticulously, under the superb guidance of the masters, a new form of dance was introduced, and this was patterned on the Mahari dance. And Mahari dance is a dance that is strongly related to the temple, and it has a long history. When it got started and how it got started, it is still shrouded in mystery, like the cult itself. Anyway, there are 7 types of women, those who are called the Maharij. They were offering their services, and there the Odia culture is reflected superbly. Not that they were all dancing, they were also singing, and here everything is an art. And when they were to lament, particularly on this Radha, because Lord Jagannath offers a Radha to King Indradyumna, who patronized the cult of Juggernaut here on the land of Nilachala. Nilachala is also known as Niladri, and Nilanchala also. And this blue color is attached to this because the origin of the Jagannatha cult lies in the worship of Nilamadhava in very, very ancient period. So the blue color is attached. People, the researchers, they opine that Nilamadhava was nothing but a piece of divinity, or the Brahma in blue sapphire. Well, they are all to be researched into, because there is no historical proof, even though Jagannatha cult has a history, and the worship of Jagannatha doesn't belong to any Purana. Lord Jagannatha doesn't belong to mythology, he belongs to history, he belongs to our times. So the worship and the cult has come down the ages, and it had been also going through many, many changes. And this is the Pahandi of Lord Balabhadra. He is basically understood to be the Bada Thakura. Bada means big. Actually, he is the big brother, the eldest of the siblings. And it is the protocol, the divine protocol, that Lord Balabhadra has to alight his chariot at first, particularly after following Lord Sudarsana. And Lord Sudarsana is none but Sudarsana Chakra himself, who attains the shape of pole as a matter of Saivite tradition, because this is a representation of phallic worship. As it is understood, Jagannatha cult is the melting pot of Shaivism, Vaishnavism, Tantrism, and the worship of sun god, that is Saura, and also Ganapatya. So this is how the entire Jagannatha cult has been raised on the belief of the people. Lord Jagannatha belongs to the people. Lord Jagannatha belongs to the universe, as the name suggests. And this place used to be known as Nilachala. If we try to find out a wider meaning to the word Nilachala, actually the land that stretches from the river Mahanath, the river Vaitarani on the eastern side, to river Rishikalya on the western side, the entire piece of land was known as Nilachala. And at this point, and then on the center of it, lies the navel of universe, where on the mound of the hillock, there lies the temple. And to carry on further in Hindi, it's over to Ashok Pandey. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ के देश सांस्कृतिक नगरी पुरी के बड़दान से
यह 2015 के 9 कलेवर का पहला महाप्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जहां आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय शाश्वत संयुक्त परिवार की अवधारणा को साकार करते हुए जगत के नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी इस बात का संदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले बड़े भाई आगे चलते हैं और इसी शाश्वत परंपरा के तहत पहंडी विजय का यह दूसरा दौर बड़े भाई बलभद्र की पहंडी चल रही है। उत्कृष्ट कलाओं का प्रदेश उड़ीसा कहलाता है और ये जो आप देख रहे हैं उत्कृष्टता का बेजोड़ नमूना इस संसार के स्वामी जगत के नाथ की एक बहुत अनुपम देन है कि सब कुछ इन्हीं से शुरू होता है। जिस तरह से नदियां आकर समंदर में मिल जाती हैं, उसी तरह से तमाम सभ्यताएं, तमाम संस्कृतियां आकर के महाप्रभु जगन्नाथ की संस्कृति में विलीन हो जाती हैं और एकता, शांति और मैत्री का संदेश पाती हैं। इस 2015 के 9 कलेवर का यह पहला जो रथ यात्रा है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, मैं अपने भक्तों को, अपने दर्शकों को और दूरदर्शन के सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ आनंदमय भक्ति को केवल स्वीकार करते हैं। आनंदमय भक्ति मैं समय आने पर विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बड़े भाई बलभद्र अब पहंडी विजय के साथ अपने ताल ध्वज रथ पर विराजमान होने के लिए अपने भक्तगणों के बीच आगे बढ़ रहे हैं। यह सिंह द्वार का वह दृश्य जो धर्म का प्रतीक है और यहीं से वे आगे बढ़ेंगे और जाकर रथारूढ़ होंगे। रथों पर विराजमान होकर ये तीनों विग्रह, साथ में चतुर्धा मूर्ति सुदर्शन जो पहले पहंडी के साथ अपने देवी सुभद्रा के रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। अब बलभद्र का यह पहंडी का जो क्रम है आप देख रहे हैं, यह सिंहावलोकन पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र का है, जहां से आप देख रहे हैं कि श्री मंदिर जो अपने आप में एक कलयुग का पूर्ण दारू ब्रह्म का वह मंदिर है जो अपने रत्न वेदी का आज परित्याग करेंगे और जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, पतितों को तारने के लिए, अपने उन भक्तों के दर्शन के लिए जिनके लिए वे एक साल में एक बार कम से कम अपने रत्न सिंहासन का त्याग करते हैं। संसार के जितने भी मंदिर हैं, संसार की जितनी भी सभ्यताएं हैं, संसार की जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन मंदिरों की परंपराओं में एकमात्र यही पूर्ण दारू ब्रह्म है जो अपने रत्न वेदी का त्याग करते हैं अपने भक्तों के लिए। यह जो सिंह द्वार का दृश्य देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और ये रथ यात्रा का पावन दृश्य, ये नीलाचल पर्वत और नीलगिरी पर्वत पर एक समय में विश्व बसु के द्वारा नील माधव के रूप में जहाँ पूजे जाते रहे, वे सतयुग के अवंती के नरेश के द्वारा पूर्ण दारू ब्रह्म के रूप में पूजे जाने लगे और यह परंपरा करीब 1000 वर्ष पुरानी परंपरा है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बड़े भाई बलभद्र का वह दृश्य है जो पहंडी विजय के साथ अपने सेवायतों, भक्तों, आत्मीय जनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने ताल ध्वज रथ पर विराजमान होंगे। यह जो परंपरा चली आ रही है, यह 9 कलेवर वर्ष 2015 की वह व्यवस्था है जिसमें सब कुछ नवीन है। हमारे विचार नवीन है, हमारी भावनाएं नवीन है, हमारी भक्ति भाव नवीन है और सभी देव विग्रह और यहाँ तक कि चतुर्धा मूर्ति भी नवीन है और इन तीनों रथों पर देव देवियाँ, पार्श्व देव देवियों से लेकर के सभी सुग्गे और अन्य जो चिन्ह प्रतीक हैं, शुभ चिन्ह, वे भी नए बनाए गए हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान जगन्नाथ आनंदमय भक्ति को स्वीकार करते हैं और आनंदमय भक्ति का यह वर्ष है 9 कलेवर का वर्ष, जिसकी ये पहली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। आज दूरदर्शन ने बहुत व्यापक इंतजाम किया है पूरे विश्व को इस विश्व चेतना के प्राण, विश्व मानवता के केंद्र बिंदु महाप्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा को आंखों देखा हाल दिखाने के लिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं यह परंपरा तेलंगी बाजा जो आपके सामने एक अलग रूप में, एक अलग लय में, एक अलग स्वरूप में एक स्वर दिखाई दे रहा है, एक आवाज़ गूंज रही है, वह है धर्म में। और इसके अंदर जो ताकत है
वह जय जगन्नाथ की ताकत और यह विजय का प्रतीक है। सामने आप देख रहे हैं ये जगन्नाथ मंदिर सूचना केंद्र है, जहाँ पर भगवान बलभद्र निकल पड़े हैं अपने रथ पर आरूढ़ होने के लिए। व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त, पूरा प्रशासन श्री मंदिर प्रशासन से लेकर उड़ीसा प्रदेश पूरी तरह से तैनात और बड़े ही व्यापक तरीके से इसका इंतजाम किया गया है। स्कंद पुराण में वर्णित जिस पुरुषोत्तम महात्मा का वर्णन, जिस जगन्नाथ महात्मा का वर्णन आज पूरी धाम में 15 जुलाई से श्री नाहर गजपति महाराज के निवास स्थल पर भक्त निवास में एक पंचरात्र महोत्सव का भी आयोजन चल रहा है। यह पावन दृश्य जो देख रहे हैं आप अपनी आंखों के सामने, यह भक्ति का वह अथाह समंदर है जहां भक्त अपने तन मन और धन से लगे हुए भगवान जगन्नाथ के नवीनतम दर्शन के लिए। यह देखिए सेवा का कार्य, स्वयंसेवी संस्था है। यह अपार भीड़ लाखों की संख्या में जो पहले कभी भी सुबह बेला में देखने को नहीं मिलती थी, आज यह दृश्य लाखों की संख्या में पहुंच चुकी है। पहले जो हम लोग आंखों देखा हालात को सुनाया करते थे, अपराह्न बेला में इतनी भीड़ होती थी, लेकिन अभी तक कम से कम 8 से 10 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर भक्तगण उपस्थित हो चुके हैं। यह इस बात का प्रतीक कि यह नवकलेवर नई सदी का पहला नवकलेवर है जिसमें 30 लाख श्रद्धालु भक्तों के आने की संभावना प्रदेश सरकार व्यक्त कर रही है और उसके तहत जो व्यवस्था की जा रही है उसमें हर तरह से लगभग 250 से 300 स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। मैं एक बार फिर अपने भक्तों को बता दूं कि हमारी व्यवस्था के तहत जितनी भी बातें आप देख रहे हैं, यह मंदिर प्रशासन की बहुत बड़ी देन है कि स्कंद पुराण में वर्णित जिस तरह की पूजा विधि की विधान है वही अब पूरी श्री मंदिर में धीरे धीरे विकसित हो रही है। और इसका एकमात्र उदाहरण पंचरात्र महोत्सव का शुभारंभ है जो 2012 में आरंभ हुआ और इस वर्ष भी चल रहा है, जिसके एकमात्र नेतृत्व की जिम्मेदारी हमारे पुरी के गजपति महाराज निभा रहे हैं, जिसमें पुरी के शंकराचार्य और श्री मंदिर प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। यह श्री मंदिर का बाहर का दृश्य जो अपने आप में हर तरह से सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। समय आने पर इसकी विस्तृत जानकारी हम एक एक करके देंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि एक समय था जब विश्व वसु नील माधव के रूप में इसी नील शैल नील पर्वत पर भगवान जगन्नाथ की पूजा करते थे। कालांतर में वही इंद्रद्युम्न राजा जो है, यह है गुंडीचा घर, जहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करके अवंती नरेश ने यह वरदान पाया कि पूर्ण दारू ब्रह्म के रूप में अवतार हों और समुद्र के तट पर, महोदधी के तट पर प्लावित होता हुआ वह काष्ठखंड जिससे निर्मित चतुर्धा मूर्ति, और यह वर्ष 9 कलेवर का वर्ष था और आज भी 9 कलेवर का वर्ष है जहाँ गुंडीचा घर को देख रहे हैं। यहीं पर 100 अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था और प्रसन्न होकर भगवान ने दिव्य संदेश दिया था कि तुम जाओ महोदधी के तट पर, जहाँ पर तुमको एक काष्ठखंड तैरता हुआ मिलेगा, उससे हमारे विग्रह का निर्माण करो। और आज यही परंपरा वर्षों से, शताब्दियों से चली आ रही है। सतयुग से लेकर आज यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हर कुछ नवीन है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं बड़दांड का, वह दृश्य जहाँ सिंह द्वार के ठीक सामने तीनों ही रथ है। अब सामने से अगर देख सकते हैं तो देख सकिए, देखिए हमारे पीछे दूरदर्शन का अपना बूथ है जहाँ से आप आंखों देखा हाल सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और यह जो आप देख रहे हैं यह हमारी उत्कृष्ट कलाओं के प्रदेश का वह रूप है जो हर तरह से भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा के समय में यह निवेदित किया जाता है। जैसे बनाटी खेल की बात हमारे सहयोगियों ने आपको बताई थी, जो आज उड़ीसा प्रदेश सरकार ने अपने खेल मंत्रालय में शामिल कर लिया है। यह है महाप्रभु बलभद्र। यह अपने आप में इस बात की संदेश हैं, श्वेतांबर जो हर तरह से अपने आप को यह
आदेश देते हैं कि अगर भद्रता हो तो बल के साथ है, इसीलिए उनका नाम है बलभद्र। और अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं अपने सहयोगी सुभाष पारी को माइक्रोफोन सौंपने से पहले एक बार फिर ये बताना चाहूँगा कि व्यवस्था इस वर्ष की पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ही अच्छी रही है, उत्तम रही है। जय जगन्नाथ, victory to Lord Jagannath. The proceedings of the Rath Yatra, the famous festival of chariots of Lord Jagannath with his siblings and his Ayudha Sudarshana, is in progress. You can see a part of the chariot of Lord Jagannath, Nandi Ghosh, on the right of your screen, and the volunteers helping the person who was fainted. But right now what you see in front is the Singhadwara, the main entrance to the temple of Lord Jagannath, where the Ghantuas, the players of the cymbals, are playing the cymbals with rhythmic movement, which will rise to a crescendo, and that heralds the start of the Pahandi. You can see a devotee carrying a part of the Tahya, a decorative adornment made of flowers and cork. The Pahandi of Lord Balabhadra is in progress. The Ghantuas are a type of servitors. Everything in the Puri temple is organized as a service. It is indeed a privilege. Seva is not to be understood as something which is a right or a service, but a privilege granted by the Lord himself to perform certain part of the ritual, certain part of the ceremony during his daily worship or during the special festivals, and especially during Rath Yatra, which is the grandest of the grand festivals of Lord Jagannath. What you see in front is the flowers adorning the Singhadwara, popularly known in English as the Lion's Gate, because of the two gigantic lions standing guard right in front. And here is a panoramic view of the three chariots eagerly awaiting to welcome their dear lords, Lord Balabhadra, Goddess Subhadra, in whose chariot Sudarshan is already seated, and Lord Jagannath on the chariot with a yellow and red stripe for its canopy. You can see here Subhadra, supine, being carried by the devotees. She is the younger sister of the Lord Jagannath and Balabhadra, shorter in height, slim, golden colored, and she is being carried literally on the shoulders of the devotees. Now she has been steadied, but she literally flies in the sky, which is known as Sunya Pahandi, literally sailing through the crowds and carried on the shoulders lovingly by the Daita Sevaks. You may see that many of the Daita Sevaks have tonsured their head. That's a part of the Navakalavara ceremony, when the new deities were given jivanyas and then taken inside the sanctum. An essential divine matter was transferred from the old bodies to the new ones, which is known as the transfer of the Brahmas and the changing of the bodies. Ghata Parivartana. Ghata Parivartana is changing of the bodies, and the Brahma is transferred. Brahma, of course, remains unchanged. It is Avinashvara. It is Akshara. That means it is never reduced. It is never, it decays. It is the essential divinity. And the old bodies are then buried inside the temple in a place on its north-western corner known as Koili Vaikuntha. And
Now we'll take the question from Mr. Srinath. What is Dayana? Why Mahaprasad is called Avada? Dayana is a kind of a leafy plant. It's a very short plant, and the smell is something which is really out of the world. It is a divine smell and something which is very dear to Lord Jagannath along with Tulasi. And I had a personal experience of this because Dayana is difficult to grow, and in the Bada Odiya Matha they have brought this Dayana leaves and they have grown some small plants. Now if you put it in a small receptacle, the smell lasts for months together. No doubt Lord Jagannath, who lives like a royal personage, enjoys Dayana. Tumbha Sribhuje Dayana Keri Keri. Another viewer has asked a question, what is the relationship of Shankaracharya with Sri Mandir? This is a very interesting question because Adi Shankaracharya in the early 9th century visited Puri and established his Govardhana Pitha or Bhogavardhana Pitha and associated Puri not only as a Vaishnavite shrine but with Lord Krishna. And here he put Padmapada, his principal disciple, as the first in charge of the monastery. And he is the head of the Mukti Mandapa Sabha, and he also has a darshan of Lord on the chariot as a part of the ceremonies. Why is Lord Anarnath worshipped during Anabasara? First we have to understand what is Anashara, and then we can look at the relationship of Alarnath and Anashara. Anashara is the period during which the deities, after their ceremonial bath on Snana Purnima, suffer from ritual convalescence and are treated with roots, and then they are given fruits and other uncooked food, and he is in charge of the Daita Sevakas. During this period, Alarnath, a form of Vishnu who is worshipped in a separate shrine close to the place known as Brahmagiri on the banks of Chilka, he is worshipped, and it has become famous after Lord Chaitanya started visiting this temple regularly during the Anashara period, because Lord Jagannath was in seclusion and no devotee could see him. Only the Daita Sevaks treated him, and during this period whatever repair and renovation of his body was also done, and then he was seen only on the Navajavana Darshan. So during this period in the Alarnath temple, which is associated with the Alvars and especially with Ramanujacharya, among one of the great Alvars. So from the word Alvar, this Alarnath is an Apavrangsha, and that is how this Alarnath temple has become famous and is now regularly worshipped. Particularly its kheer, which is offered as a bhog, is very famous. What you see now is a view of the grandeur of the temple of Lord Jagannath, which has 4 major chambers like the typical temples in its fully developed form by about 11th century when Lingaraj temple in Bhubaneswar was constructed. Then the temple of Puri. You can see the Singhadwara resplendently decorated with flowers, yellow, orange and green with white, and pendants of flowers hanging from the lintel. Above that are the images of Goddess Lakshmi with her Shaktis. You can see the black Kshatri. This also indicates that Lord Balabhadra is not far behind. Here you can see the Neela Chakra, and below that is the Kalasha or the sacred pot like structure, followed by the Aula and then Beki, and then the curvilinear temple, which is the sanctum sanctorum, and in front of it there are the pyramidal temple and one inverted boat type Khakaramundi temple and the Pidha Deva. And you can see the gateway to the inner compound and a little bit of the Baisi Pahacha or the 22 steps through which we enter the inner compound. This is the Banati Thela
or the acrobatics being displayed by the members of the Jaga Akhadas. You can see the people eagerly awaiting the next stage of the Pahandi, and a scene of the palace of Gajapati king before the beginning of the ritual of Rath Yatra. This year, it being the Navakalevara year, means a new embodiment. So there were elaborate arrangements and preparations for the Navakalevara, and we are showing you the pre-recorded events of the event that is known as the Navakalevara, and this is the Sri Jagannath Ballabha Matha, which plays a very crucial role, because that is the place where they spend the devotees and the search party, they spend their first night, because there is a search party that begins from the Jagannath Temple, and they are given the turban of order that is popularly known as the Sadibanda, and this is the ceremony that we are finding on the screen, and that exactly happened in the Sri Nahara, or the royal palace of the Gajapati Maharaja, and this is the symbolic representation of Sudarshana Chakra, and this is carried just to find protection from all evils and evil forces also. So this is how the search party begins, and before the search party begins, there is a yagya, or the offering to the fire god, and there the turban of order are presented to the servitors, and there is the whole bunch that begins. It's called the Vanajaga Jatra, after staying for the night at the Jagannatha Ballabha Matha, which is one of the Vaishnavite shrines on the Grand Road itself. And there the entire team moves to Kakatpur, where the shrine of goddess Mangala is located. You can see Lord Balabhadra just stepping out of the Singhadwara, swaying gently back and forth with a huge floral crown made of green tulsi leaves and specified flowers, cork and other decorative elements, and a cheetah you can see right in the middle, which is a ornament for the brows. The Ghantuas playing the Ghanta, swaying gently and beating the cymbals made of what is locally known as kangsha or bell metal. The Arunastambha, the chloride pillar, Lakshmi, atop the lintel of the Singhadwara, Lord Balabhadra, white, elder brother of Krishna, also known as Balarama, always eager to see that no harm comes to his young sibling. One with tremendous might, and nobody dare take any chance with Lord Balabhadra, the killer of the demon Pralambashura, the devotee dressed as Hanuman and waiting near the steps of one of the chariots, chariot of Balabhadra, awaiting the arrival of the deity who is going to ride this chariot. He is just stepping out of the Singhadwara to get a glimpse of the visage of the deity. Devotees are waiting since dawn. The Neela Chakra, and atop that the Patita Pavana Bana, the pennant of the temple fluttering.
flag of red in color with a golden crescent moon and window in it. The Neela Chakra is about 12 feet in height and a 36 feet perimeter with 8 spokes, and this flag is tied every day in the evening in a ritual, and it is taken to the top by the Punara Sevakas who have the privilege. As I said, every service is nothing but a privilege. And then earlier the flags used to touch even the ground. It was so long, but these days for the safety of the Neela Chakra, the length of the flag has been reduced somewhat, and just the flag staff is there. On top of that the flag is fluttering, and below that the portion is known as the kalasa or the sacred pot. Of course it is part of the structure, but it's in the shape of a pot, and below that is the Amla. Amla is actually the Amla fruit. It's because it has serrated surface, that's why it is known as the Amla, and below that the Deki, and below that the temple. We get a panoramic view here of the temples in the background and the chariots in front. You can see on your extreme right, you can see the chariot of Lord Jagannath, which has the distinctive yellow stripe. And here again you see the sample of the acrobatics of the people in Jaga Akharas, members of the Jaga Akharas, which are gymnasiums, locally known as Jaga, and also seats of the cultural centers where music and Gotukpo dance is also practiced. But particularly it is famous for the Malasri. The Pahandi of Balabhadra is in progress. Pahandi is actually a step-by-step progress. The black umbrella, which is associated with Lord Balabhadra, it's a combination of black and white and yellow, which is the color of goddess Subhadra. You can see that the servitors, stout Daitas, are steadying Lord Balabhadra, who is quite huge. There are Pitiyas and Kakuas. Pitiyas are those who support him from the back, and Kakuas are those who support him at the shoulder level. So he is pulled and pushed in a very delicate movement. The grandeur of the Orisan style of temples, the Kalinga style of architecture of the temples, typically has 4 chambers. The sanctum sanctorum or the door at the back, here you can see it in black. Till the last year it was surrounded by scaffoldings for repair, but this year in the Navakalavar year those have been removed, and you can really see the grandeur of the tall spire which rises 214 feet above the ground level. In front of that is the Jagamohana or the audience hall, and in front of that is the Natamandapa, roof of which you can't hardly see because it is in the shape of an inverted boat known as a Khakaramundi type, and the other 2 chambers, the Jagamohana and the Bhogamandapa or the hall of offering, are pyramidal structures, whereas the Deula or the sanctum is a curvilinear structure. This is the typical organization of the Odishan temples in their full flowering. The temple started sometime around 6th-7th century, and by the 11th century it has reached maturity, the Kalinga style of architecture. Here you can see Lord Balabhadra swaying gently, moving in different directions and giving pleasure, joy, ecstasy to the millions of devotees. Here you can see the governor of Odisha, and now again you see Lord Balabhadra gently stepping out onto the Bada Danda, the big high street one can say, but locally known as the Grand Avenue, which stretches some 2.5 kilometers from the Sri Mandira on the southern edge to the Gundicha Temple on its northern edge. The Grand Avenue curves slightly towards the east on this direction, and this is the road which the chariots will take when the Rath Yatra, actual Yatra or the journey begins. The grand floral crown known as Tahia is made by Raghavada's Mutt, and it is offered
to the deities. That's a privilege which was granted to them several years back, several centuries back, and there is a colorful legend associated with that. Once during the chapel, the boat ride of the deities, Madana Mohana fell into the tank and could not be retrieved. And then the king was worried and tried to find out who had this same type of image. And it was Raghavada's Mutt which had this image, and they offered it to the temple, to the Gajapati, and that is how from that day they were given the privilege of providing the floral crown, floral tiara, floral decoration for the head of the deities, Jagannatha, Balabhadra, Subhadra, and also Sudarshan. Sudarshan, as you know, is already seated here. You can see the Singhadwara of the Gundicha Temple, and on the right you can see the Nakachana Dwara. Again, a colorful legend is associated with the Nakachana Dwara. Apparently this was constructed with the money from the nose ornament of the queen. That is why it is called as the Nakachana Dwara. Chana is like a lintel grain, and the shape of the nose ornament, and it is the proceeds of the cost of this Nakachana made of gold which met the expenses of the special gate, and it has a very special significance. During the, you can see the milling crowds all black. We have been seeing this festival for the last 20 years for Doordarshan and commenting on it, but we have never seen such a huge crowd so early in the morning. And the arrangements have been made accordingly. You can see some people spraying the water on the devotees, the travelers, the tourists, trying to give some relief from the humidity, part of it on account of the congregation of the crowds. You can see there is a big difference between the eyes of Lord Balabhadra and Lord Jagannath. Balabhadra and Subhadra have slightly elongated eyes, whereas Lord Jagannath has perfectly round, perfectly circular eyes. And that's why those are huge eyes. That's the greatest attraction, which has a mesmeric charm and enchants the devotees and attracts with a magnetic force, as it were. A grand view of the chariots. The chariots themselves are sacred. We may tell you that during the current year's Rath Yatra, although in Puri all the 3 chariots are made anew every year, but there are certain parts which are continuing. Here you can see the details of the tahia, which has a bamboo frame at the back, heart shape, and on top of that a background of cork finely cut into floral and geometric shapes is given, and the final layer is a layer of flowers and leaves which are specific and have been carried on. The tradition has been carried on for several hundred years, and these are made by craftsmen who are experts in making them. The milling crowds and the police force deployed in good number are gently controlling the enthusiasm of the crowd and holding them at bay from crossing over to come closer to the dear darling Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Goddess Subhadra. The progress of the Pahandi, Pada, as some scholars have pointed out, that means taking one step at a time. So the step by step is absolutely necessary, because especially Lord Balabhadra and Lord Jagannath are quite heavy, and they are tied with silken ropes and an wooden frame at the back, which is known as a Senapata Lagi ceremony, and they are tied with silken ropes both at the front and the back, and they are carried forward so that they don't tilt to one side and they are not there is no injury to them. So that itself is a great maneuver done by the Daita Sevaks.
And to carry on the commentary in Hindi, I now hand over to Lakshmi. धन्यवाद सुभाष जी। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। संगति एवं समन्वय के प्रतीक जगन्नाथ विश्वम विष्णुम वशत्कारो, प्रारंभ ही विश्व आराधना से होती है। महाविष्णु की प्रभा संपूर्ण विश्व में है। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, सारे विश्व में आपकी आभा फैली हुई है, सबको चकित करती है। यहाँ पर आकर सारी की सारी धाराएं एक हो जाती हैं, एक लय में मिल जाती हैं। यहाँ पर आकर सारे वर्ण एक वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर सारे संप्रदाय एक संप्रदाय में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रभु बलभद्र जी की पहंडी, पहंडी अर्थात पद हुंडन कर चलना, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए महाप्रभु अपने रत्न वेदी को छोड़कर भक्तों के मध्य आते हैं। कारण वे जानना चाहते हैं भक्तों के दुखों को, सुखों को। वे हर पल हर क्षण भक्तों का निरीक्षण करते हुए, उनका हाल चाल पूछते हुए, उनके करुणा भरे चितवन से भक्तों को आह्लादित करते हुए, आनंद से भरते हुए आगे जा रहे हैं। इनके सिर पर लगा हुआ ये टाहिया जो राघवदास मठ द्वारा दिया जाता है, ये टाहिया दरअसल शाबर संस्कृति का प्रतीक है। जगन्नाथ संस्कृति बड़े ही विलक्षण रूप से वैदिक, लौकिक एवं शाबर संस्कृति का सुंदर सम्मिश्रण है। यहाँ पर फिर एकीकार की भावना समक्ष आती है और ये टाहिया के लगते ही महाप्रभु की जो आभा है, जो उनका सौंदर्य है, वो जैसे और बढ़ जाता है, वो और अधिक बढ़ जाता है। द्विगुणीकृत नहीं, कहा जाए तो सहस्त्रगुण बढ़ जाता है। विराट दिखने लगते हैं महाप्रभु। यहाँ पर घंटवादक अपने मन के सभी भावनाओं को जैसे अपने हृदय के साथ, हृदय के स्पंदन के साथ मिलाकर घंटवादन के माध्यम से अभिव्यक्त करते चलते हैं। झूमते हुए ये बलभद्र महाप्रभु कहते चल रहे हैं कि इस विश्व में यदि कुछ सत्य है तो सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है और बाकी सब मिथ्या है। गोटिपुओ नर्तक विविध रूप से अपने मन की भक्ति को यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। हर एक कलाकार जो अपने मन के उद्गारों को अपनी भावनाओं के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, गायन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कोई भी यह पल छोड़ना नहीं चाहता जहाँ पर वह अपने मन के भीतर उमड़ रहे अथाह भक्ति की लहरों को बाहर उड़ेल देता है और जिसमें प्लावित होकर भगवान स्वयं भक्तों के मध्य चले आते हैं। पहंडी एक बड़ी ही सुंदर प्रक्रिया है जिसमें पदहुंडन करते हुए महाप्रभु निकल कर आते हैं। पहंडी के पहले महाप्रभु को सेनापट्टा लगाया जाता है। सेनापट्टा दरअसल एक प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है जिसकी वजह से महाप्रभु के दारवी तनु को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे, भक्तों के आवेग से उन्हें किसी प्रकार की क्षति न हो, इस वजह से सेनापट्टा लगाया जाता है। उसके बाद महाप्रभु की डोर लागी होती है। यहाँ पर मोटे मोटे रेशम के डोरों से महाप्रभु को बांधकर भक्त अपने हिसाब से चलाता है। कितनी ही विलक्षण बात है कि इस चराचर जगत का हर एक प्राणी जहाँ पर उस महाप्रभु के हाथों में बंधे हुए कठपुतली की तरह उनके दिशा निर्देश पर आगे बढ़ता है, यहाँ पर महाप्रभु भक्तों के हाथों की कठपुतली से, उनके हाथ में बंधे हुए डोर से लेकर संचार तथा देवे, जिस प्रकार से देहधारी मनुष्य व्यवहार करता है इस मर्त्य लोक में आकर, उसी प्रकार से भगवान स्वयं भी इस मर्त्य लोक में आकर देहधारियों जैसा व्यवहार करते हैं। ये सिर्फ नवकलेवर की बात नहीं है, बल्कि उनके जो नित्य रीति नीतियां हैं उसमें भी हम देखते हैं कि संपूर्ण रूप से वो मानवों जैसा ही व्यवहार करते हैं। सुबह उठकर जब से पाहुड़ खुलती है वहां से लेकर दांतों का मर्जन करना,
उसके बाद में बिंब स्नान करना, मुख प्रक्षालन करना और उसके बाद भोग लगना, ये सारी की सारी चीज़ें अगर बारीकी से देखें तो एक मनुष्य जैसा ही वो व्यवहार करते हैं। इसीलिए तो हर एक अंतरंग भक्त तो फिर भी कहीं न कहीं सीमित हो जाता है। किन्हीं वजहों से भक्त अगर मंदिर में जा नहीं पाता है तो यहाँ पर भगवान भक्तों और अपने बीच की सभी सीमाओं को तोड़कर, सभी बंधनों को तोड़कर वो भक्तों के साथ एकीकार हो जाना चाहते हैं और ये भावना भक्त के और अधिक निकट भगवान को ले आती है और वहाँ एकीकार का सा अनुभव भक्त करने लगता है, जिसे हम कह सकते हैं एक आनंद की स्थिति होती है, एक परमानंद की स्थिति होती है, जहाँ पे भक्त सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ उस जगत के नाथ जगन्नाथ की इस सृष्टि का आनंद लेते हुए उसकी इस कृपा का भाजन बन जाता है, उसमें अपने आप को आप्लावित होता सा महसूस करता है। इस तरह से खुला होता है, वरना सुभद्रा एवं सुदर्शन जी का जो टाहिया होता है वह पुंजित होकर एक तोप सा लगता है, जो इस प्रकार से खुला हुआ नहीं होता है। 7 पावच के पास टाहिया पहनाए जाने के बाद कीर्तन छगड़िया भीतर आंगन से होते हुए आनंद बाजार में प्रवेश करते हैं महाप्रभु। आनंद बाजार की अगर हम बात कहें तो कितनी ही विचित्र बात है कि आनंद दरअसल बाहर विश्व में कहीं नहीं मिलता। आनंद मनुष्य के भीतर की एक स्थिति है, एक अवस्था है, और इस अवस्था को मनुष्य अगर बाहर अपने देह से खोजने की कोशिश करे तो वो उसे कभी नहीं मिलता। लेकिन ये इस मर्त्यलोक में ऐसा एक विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पर आनंद बाजार में मिलता है। यहाँ पर आनंद बाजार है जहाँ में किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं है, न जाति का, न वर्ण का और ना ही किसी प्रकार का। हर कोई वहाँ पर बैठकर, यहाँ तक कि उच्चिष्ट का भी कोई भेद नहीं है, एक दूसरे के थाल से लेकर खाते हुए विश्व भातृत्व का संदेश देते हैं। ऐसा विराट और भव्य आनंद विश्व में कहाँ देखने को मिलेगा। ये है माँ योग माया सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ एवं बलभद्र की छोटी बहन, जो योग माया का स्वरूप है, जो शून्य पहंडी में आती हैं। शून्य पहंडी अर्थात वे पद मुंडन करते हुए धीरे धीरे पद में पद डालकर आगे नहीं बढ़ती, बल्कि बस सेवायतों के साथ उनके कंधों पर सवार होकर चली आती हैं। आप योग माया हैं और योग माया का स्वरूप शून्य होता है। इसीलिए आप की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि स्वयं जगन्नाथ जो हैं उनको अपना रहे हैं, अपने बाहुओं को आगे फैलाकर, जैसे वो सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। इस क्षेत्र की महिमा ये कर भक्तों के बीच में वे चले आते हैं, क्योंकि भक्तों के कृपा की, भक्तों के स्नेह की, भक्तों के आनंद की, भक्तों के साथ की, भक्तों के करुणा की भगवान को भी आवश्यकता होती है। और इसीलिए तो भगवान भक्तों के हाथ में बंधी हुई डोरी के साथ जैसे खींचे चले आते हैं। और ऐसा सुंदर चित्र, ऐसा सुंदर भाव और कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए फिर एक बार माँ सुभद्रा योग माया पहंडी की प्रतीक्षा में। पहंडी के बारे में अगर हम देखें तो ये पहंडी 2 प्रकार की पहंडी होती है। एक होती है धाड़ी पहंडी और फिर गोटी पहंडी। ये धाड़ी पहंडी है जिसमें चतुर्धा गोटी पहंडी, और कुल मिलाकर अधिक है। सारे विश्व के कोनों कोनों से, सिर्फ उत्कल प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के हर एक कोने से भक्त यहाँ पर आ गया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर ये सिर्फ भक्त हैं, इनका कोई नाम, परिचय, पद, भाषा, जाति या वर्ण बिल्कुल भी नहीं है। हम इस प्रकार से इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर एक भक्त मात्र हैं। यहाँ पर बलभद्र आनंद बाजार से निकलकर अब धीरे धीरे बढ़ते हुए आप सिंह द्वार से निकलकर आएंगे, और सिंह द्वार से पहले आप 22 पावच से होते हुए जाएंगे। 22 पावच की भी अपनी एक गरिमा है, अपनी एक विशेषता है। 22 पावच दरअसल कहा जाता है, इसके बारे में 4 अलग अलग मत दिए जाते हैं। 22 पावचों के बारे में कहा जाता है कि ये निराकार, और उन मतों में
अब एक मत जो निराकार योगिनियों की बात करता है, वहीं दूसरा मत गोलोकवासी विष्णु के धरती के अवतरण होने की बात करता है। अब हम देख रहे हैं कि माँ सुभद्रा पहंडी पर आ रही हैं और पीछे जगन्नाथ जी भी अपने रत्न सिंहासन पर छोड़कर पहंडी पे निकल चुके हैं, आनंद बाजार से होते हुए बाहर आ रहे हैं। अब जब गोलोकवासी विष्णु के पृथ्वी पर आने की बात होती है तो कहा जाता है कि वो अष्ट वैकुंठ, श्री वैकुंठ, कैवल्य वैकुंठ, कारणार्णव वैकुंठ, शेष साई वैकुंठ, श्वेतदीप वैकुंठ, परव्योम वैकुंठ, गर्भो 22 संख्या यहाँ पर भी होती है। कुछ एक और मत के अनुसार 10 पूर्णावतार, 10 अंशावतार, जीव एवं परमात्मा, कुल मिलाकर 22 की संख्या फिर आती है। अलग अलग प्रकार से भक्तों ने अनुमान लगाया है, अलग अलग बात कही है। जो भी हो, ये बात स्पष्ट है कि ये 22 पावच वो स्थान है जहाँ से होकर गुजरकर महाप्रभु हमारे पास आते हैं, भक्तों के पास आते हैं। माँ सुभद्रा शून्य पहंडी में आ रही हैं और उनके आगे उनके भाई बलभद्र। इस पहंडी के क्रम के बारे में अगर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम क्रम आरंभ होता है सुदर्शन की पहंडी के साथ। सुदर्शन स्वयं सूर्य उसमें भक्ति के बीजों को बोती हैं ताकि भक्ति की फसल उग सके और उस लहलहाते हुए फसल का आनंद हर एक भक्त ले सकें। और उसके बाद भगवान की भक्ति के रूप में स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आते हैं। और इस क्रम के बारे में अगर हम देखें तो वो एक तरह से ज्ञान, क्रिया एवं भक्ति का भी सुंदर सम्मिश्रण है। ज्ञान अर्थात सुदर्शन, क्रिया जो कि बलभद्र जी का प्रतीक है, एवं भक्ति सुभद्रा का, और ये तीनों मिलकर ही एक संपूर्णता या संपूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। और ये संपूर्ण भक्ति, भगवत भक्ति, यहाँ पर हम सभी भक्तों को प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। Lord Balabhadra, and just behind him, right now crossing the Ananda Bazar, is Lord Jagannath. Lord Balabhadra is already on the Bada Danda and he is doing the circumambulation of the chariots, which is part of the ritual of Pahandi, and his tahia, the floral crown, is tilted a little bit. The ghantuas beating the bell metal gongs with gusto, enthusiasm, but all in a rhythmic movement. Balabhadra is moved, being step by step, he is being steadied, literally flying on the shoulders of the Daita Sevakas. That's why it's called Sunya Pahandi, flying in the horizon or flying in the skies. Sunya Pahandi. The milling crowds spread from the temple gate right up to the Gundicha shrine, the garden house, the place of birth of the deities, the place associated with the origin of Lord Jagannath, Balabhadra, Subhadra and Sudarshan in their present iconography. Not far from that is the Mahodadhi, a devotee dressed as Shiva, dancing on the Bada Danda in front of the chariot. Beating the rhythm are the players of the gong, Ghantua Sevakas, and he is keeping time with the rhythm of that. Why is it called the chariot festival, the Rath Yatra? Because it has several names, but it is more popularly known as Rath Yatra because the deities ride the chariots, and this is one of the few festivals where, certainly in India, we have smaller chariots of other deities, but here we have the largest chariots where the original deities travel, and they come out and they have a journey and a outing for 9 days. Systematized the arrangement inside the temple late in the 12th century and early in the 13th century, but this is the main division of the servitors, but there is a separate division of 36 classes of servitors for
servitors for the cooking and also for the ratha, making of the chariots. Marada Pitha is something which is very well known, because when there was attacks on the Jagannath temple, the deities were transported to a little distance and kept in hiding. Marada, which is in the Ganjam district in Athagar, was the place where the deities remained for more than 2 years, almost 2.5 years. And that is why that is known as the Marada Pitha. And even today it is remembered, because when the flag, pennant, Patita Sonpur, and this is mentioned in the Madala Panji, which is the temple chronicle, where the first deities were buried under the earth to protect them. And that place still carries the memory of that incident, and actually it was the deities were recovered from there, although the shell had decayed, and then the deities were remade. So in a way that was also associated with the first Navakalevara, at least as far as the records are concerned. That is why the Sonpur, that place is greatly associated with the Navakalevara ritual, which is the current year's major, providing shelter in the Navakalevara gramas or villages, be it in shape of providing free food by several voluntary organizations, be it in terms of separate toilets. These arrangements have been made to meet the scale of enthusiasm, the scale of visitors congregating, descending on Puri, the holiest of the holy cities of India, among the 4 dhamas of India, Chatur Dhama, and where, like the Kumbh Mela, this Navakalevara ceremony takes place only once in several years. This time it is happening after a gap of 19 years. Last one was in 1996. You can see the grand moment, and he is now looking south, but in a moment he will be turned east to face the Singhadwara. Here on the Baisi Pahacha, the 22 steps, the Ghantuas are playing on the cymbal, and you can see Chhata Chhatri, the ceremonial umbrellas are being waved to provide relief to the deity. Let us not forget that he is as human, as perhaps most human of all the deities, and that is why he is so dear. And you can see the white chhatra, large umbrella, which is always carried with Lord Jagannath for his ceremonial journeys. You can see the tahiya, or the floral crown, fans with long handles and some with small handles, and trying to offer their own prayers, own seva, a service of love, a service of devotion. You can see the delicate applique work on the umbrella, which is a great craft tradition of Odisha, and within that also you can see the Chandra and the Bindu, the crescent moon shape and the circular dot on top. And these umbrellas are the work of applique work, which is a living tradition at Pitli, which is justly famous, but there is also a group of applique. See that yellow and red umbrella, Chhatra, which is associated with goddess Subhadra, and here you can see the gentle swaying movement of Lord Jagannath in Pandi. He has been often compared with an elephant swaying in joy with movement, and several saint poets have compared it. One of the poets have said, he has said, Hathi Asoire, and Hathi Dev Boy associated with Ganesh, the dispeller of all vignas or trouble, the one who removes all obstacles, Vigna Vinashana, Ganesha, who is
always worshipped first in any puja or in any ceremony. To continue the commentary in Sanskrit, I now hand over to my colleague Surendra. दुर्जक्षोभितलङ्गलं भगवान् बलभद्रदेवः आदौ आगतः तदनन्तरं भगवतः श्री जगन्नाथस्य पदपातयात्रा प्रवर्तते। पहण्डी इति यदुच्यते सा भवति इयं यात्रा मनोहारिणी यात्रा भगवतः जगन्नाथस्य। अहो मनोहारिणी कथं देवः यतः जस्य देवस्य दर्शनार्थं सर्वे उत्कण्ठिताः। ह्यः जेषां देवानां दर्शनं न प्राप्तं जनैः अद्य एव तथ्यतः नवकलेवरस्य दर्शनं क्रियते सर्वैः जनैः एकत्र सानन्दं भक्ताः पश्यन्ति। अहो भगवान् कृपापूर्णः। सम्प्रति एवं भक्ताः विविधरूपेण नृत्यन्ति, केचित् शिवरूपेण, केचित् हनुमद्रूपेण, केचित् नृत्यतया। एवं पुनः वयं भगवतः तादृशं रूपं विलोकयामः यस्य दर्शनमात्रेण एतदेव अस्माभिः ज्ञायते। तस्य रूपस्य दर्शनम् अस्माभिरपि प्राप्यते। सम्प्रति घर्मस्य अपनोदनाय जलसेचनं क्रियते। सर्वकारपक्षतः मनोहारिणी व्यवस्था इयं सर्वेषां भक्तानां यथा विना कष्टं दर्शनं स्यात्। नवकलेवर यात्रा भगवतः यथा आनन्ददायिनी सर्वेषां भक्तानां कृते भवेत् तदर्थं यं मनोहारिणी व्यवस्था वयं पश्यामः। अपरूपं चित्रं। सम्प्रति भक्ताः सेवकाः सर्वे एकत्रिताः, सर्वे उद्ग्रीवाः। भगवान् कथं अस्माकं सानन्दं रथारूढो भूत्वा अस्माकं सर्वेषां दारुणात् सर्वदुःखानाम् अयं दारुब्रह्मदेवः अस्माकं सर्वं दुःखं दूरीकरिष्यति, अस्माकं सर्वानन्दविधायको भविष्यति। भक्तः श्रीमान् जगतः पुष्पादिकं तुलस्यादिकं प्राप्तुं जनानां महती उत्कण्ठा। एवं तावत् तुलसीदलस्य तथा जनसम्मर्दः दृश्यते। सम्प्रति बडदाण्डे बृहन्मार्गे चित्रायाः अतीव महत्वशालिनी व्यवस्था। यस्मिन् दूरे जः तिष्ठतु सः तद्दृष्ट्वा एव आनन्दितः भवति। अहो अहमपि भगवन्तं पश्यामि। चक्रस्य दर्शनम् अस्माभिः क्रियते। एतत् चक्रस्य पुरतः कदाचित् यत्किमपि प्रदर्श्यते तत् चक्रस्य कृते समर्पणं भवति। भगवतः जगन्नाथस्य कृते यदि कश्चित् किमपि समर्पयितुम् अक्षमः तदा चक्रस्य पुरतः तद् यदि प्रदर्शयति स एव भगवतः प्रसादः इति गृह्यते। अहो भगवान् जगन्नाथः भगवान् अस्माकं पुरतः प्रदृश्यते। एवं नवकलेवर यात्रा सम्प्रति जायते। सिंहद्वारसम्मुखे यः स्तम्भः सः स्तम्भः दृश्यते। सम्प्रति तत्र एवं तावत् दृश्यते भगवान् बलभद्रः भगवान् एवं तावत् रथयात्रा समये एवं ईमेल माध्यमेन जनानां प्रश्नाः तेषाम् उत्तरदानाय अभिनवा व्यवस्था क्रियते। एवं तावत् वयं पश्यामः भगवतः नवकलेवरस्य एवं तावत् यात्रा सा मनोहारिणी यात्रा यत्र वयं पश्यामः अत्र सर्वस्य पुष्प किरीटस्य छिन्नं जातं यतः भक्ताः सर्वे वाञ्छन्ति वयं भगवतः किमपि नीत्वा यास्यामः। पुनरपि भगवन्तं जगन्नाथं दृष्ट्वा आनन्दिताः भवन्ति भक्ताः। कारणं किं? कारणं नवीनकलेवरस्य दर्शनं सम्प्रत्येव प्राप्यते। भगवान् धीरं पश्यति। अयि भक्ताः अहं भवद्भिः सह सर्वदा अस्मि। सम्प्रति वयं बडदाण्डे यद् भगवतः यात्रायाम् एतेषां जनानां सम्मर्दः तत्र कारणं किं? सम्प्रति घण्टानादः श्रूयते। एतेन नादेन एते विनादयन्ति। एते तावत् भगवतः कृते एव नादं कुर्वन्ति। सर्वं भगवतः कृते। भगवतः कृते यदा किञ्चित् क्रियते तत् कार्यम् अमृतं भवति। वयं इच्छामः यत् अस्माकं कृते किमपि न करिष्यामः। नहि नहि, स भगवान् जगन्नाथः सर्वत्र सर्वान् कृपादृष्ट्या पश्यति। अरे भक्ताः भवतां कृते अहम् उपस्थितः, अहं यात्रायाम् आगच्छामि, स्वकीयं स्थानं त्यक्त्वा आगतः। कारणं तु इदं यत् भवतां दर्शनाय ममापि अभिलाषः वर्तते। यथा भवन्तः व्याकुलाः सन्तः मम दर्शनाय मंदिराभ्यन्तरं गच्छन्ति, सर्वे मंदिराभ्यन्तरे। लगभग 1000 वर्षों से सिर्फ इस बात का एक तरह से आश्वासन है कि तुम भक्त हो और मैं तुम्हारा हूँ।
तुम जितने मेरे हो उतना ही मैं तुम्हारा हूँ। उस भाव, उस अहोभाव के साथ भगवान श्री जगन्नाथ की यह रथ यात्रा अब काफ़ी गति पकड़ते हुए महाप्रभु जगन्नाथ इस समय आपके बिल्कुल सामने, उनके नेत्र चर और अक्षर से ऊपर उठे हुए, अपलक नेत्र पूरे विश्व को देखते हुए महाप्रभु जगन्नाथ की पौहंडी, पौहंडी यानी पदहुंडन हमारे साथियों ने आपसे पहले भी कहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलना, कदम दर कदम आहिस्ता आहिस्ता से, किसी छोटे शिशु की तरह या किसी छोटे प्रसन्न मस्त हाथी की तरह इनकी उपमा दी गई है। इनकी प्रसन्न इस समय भक्तों के हाथों में। यहाँ जो महाप्रभु की जो रथ यात्रा होती है और इसका जो पूरा उपक्रम होता है वो मौलिक रूप से दो तरह की भावधाराओं के बीच में होता है, आध्यात्मिक भावधारा और लौकिक भावधारा। और इस समय पौहंडी को अंजाम देते हुए भगवान को ऊपर उनके रथ पर आसीन करने की तैयारी चल रही बलभद्र जी को। तो मैं आपसे कह रहा था आध्यात्मिक जो विचारधारा है उसमें अणसर के समय की जो सेवा होती है उसे भावात्मक सेवा कहते हैं। मंत्र तंत्र घंट मृदंग कुछ भी नहीं होता उस दौरान। भाव सेवा जो महाप्रभु की सेवा का सबसे उदात्त स्वरूप है, महाभाव रस, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। उसकी दूसरी तरफ जो लौकिक स्तर है, जो लौकिक विचारधारा का स्तर है, उसमें भगवान In the previous century there were 5 ceremonies, and this time this is the first. And attendants to the Lord, they are called the daitaj, and they are of away from the view of the common devotees. So it went through elaborate arrangements, and after coming of the Navajauvana Darshana, or the new youth celebration, the common people, they were not allowed to have a view of their Lord because of the security reasons. Usually on the other years when Navajauvana Darshana is opened, or the new youth view is open to the people, they go and participate. But this time, for the security arrangements, it was not possible for the temple administration to allow the common people to be a part of that. And we can see somebody is holding 2 pieces of sleek wood, and in fact best of view, as close as possible, to have a view of their favorite Lord Jagannath. And this is how the 3 chariots, they are parked at the beginning point of the grand road, positioned there, so that the icons, the wooden icons which have been newly carved this time, they would be alighted, and when all arrangements are set and ready, then the pulling of the chariots, and that is the highlight moment that will be done. This is the grand view, the aerial view of the temple complex, and also the place where the all actions are unfolding. And there has been better and elaborate security arrangements, so that people are coming in large number, discomfort because of the heat and humidity, because that is also there. As we had the last reading, the 98% humidity is on the town of Puri. And this is how the Pahandi, or the stepping down of the Lord, is being celebrated or is being done. This forward, we can see this is how he swings forward and swinging backward. Every action has an equivalent of the temple at Kakatpur of Goddess Subhadra, and the whole search party was divided into 4 groups from there under the leadership of one leader, and the leader was of Daita clan. And this is where the holy wood for Lord Balabhadra was procured. And it was procured at the shrine of Goddess Sarla in a place called Jhankada in the district of Jagatsinghpur. And this is located at about 110 kilometers to the south from Puri. And this is the place where the holy wood was located, identified, and later it was cut and shaped and was carried to Puri. And the Pahandi is going on, the swinging forward and the swinging backward. Bhaya Bhaya Harang Sarva Lokaikakanatham.
He belongs to all people, to all ages, to all times. Swaying and swinging affirms the doctrine of Advaita Vedanta, Brahma Satyam, Jagan Mithya, Jiva Brahmeva, Na Aparaha, meaning Brahma or the absolute is the only real, and this world is unreal. The Jiva or the individual soul is no different from Brahma. According to Adi Sankara, whatever exists is Brahma, and nothing exists beyond that or less than that. Brahma itself is absolutely homogeneous. All difference and all plurality are illusory. And whatever has an existence or whatever exists is Brahma. This is what is symbolized with Jagannath in the 21st century. So a lot of excitement is going on, and lot of excitement is in the air. The entire proceeding is filled with secret, mystical, mythical rituals, very uncommon Vedic rites that takes little more than 3 months. And this is how the Singhadwara, or the main entrance to the temple, is jam-packed with the servitors or the ritualists, functionalists, and also some of the devotees, those who have come down from different monastic orders, because they have the privilege to come here and take part in the celebration, in this royal celebration, because he is the king of all kings, the divine king, that is Lord Jagannath, and this is the sea of people, and there is a वांगमय होता है, वह संस्कृति, धर्म और उसकी एकात्मकता से उससे भी ऊपर उठकर एक बड़ा ही अद्भुत संयोजन का संयोग होता है। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स समाज भी इस समय इतना सरल दिखलाई पड़ता है, क्योंकि हर कोई एक ही दिशा, एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ, हर किसी की आंखें महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथों को खींचने और उन रथों को आगे बढ़ने की दिशा में देखता हुआ। यहाँ पर तीनों संस्कृतियों की विचारधारा का बड़ा ही अद्भुत समावेश है। आर्य, भ्रात्य और द्रविड़ तीनों परंपराओं का यह मिलनात्मक उत्सव होता है। यह घोष यात्रा है, महाप्रभु जगन्नाथ की घोष यात्रा, और इस घोष यात्रा के में जो एक बात बड़ी गौर करने की है वो ये है कि सनातन काल से, पौराणिक काल से मंदिरों में हमें भगवान सूर्य भी रथ पर आसीन दिखाई देते हैं। रथ का भारतीय परंपरा में बहुत बड़ा महत्व है। भगवान जगन्नाथ उत्तरायण में जाते हैं, दक्षिणायन में वापस आते हैं, और एक समय था जबकि यह जो बड़दंड है, जो यहाँ से गुंडीचा यानी नीलाचल से गुंडीचा तक, सुंदराचल भी कहते हैं उसे, वहाँ तक की जो ये 2.5-3 किलोमीटर की यात्रा होती है, उसमें कभी किसी समय बीच में एक नदी होती थी जो अब विलुप्त हो गई है, और प्राचीन काल में 3 नहीं बल्कि 6 रथ बनाए जाते थे, यानी हर रथ का एक जोड़ा बनता था, यानी जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का और बलभद्र जी का, दोनों के 2-2 रथ बनते थे, और 3 रथ नदी के इस पार होते थे और 3 रथ नदी के उस पार होते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 3 रथों को मैनेज करना या उन 3 रथों को गति देना इतना, और आप देखें सामने की तरफ ये मठों के जो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, बालकनी जिसे हम कहते हैं, उन सब में लोगों का पारावार, भक्तों का हुजूम। यहाँ पर इन सबको पता है कि बलभद्र जी की पौहंडी अब समापन पर हो गई, सुभद्रा जी भी आ गई, सुदर्शन आ गए, और प्रतीक्षा है महाप्रभु जगन्नाथ के यहाँ पहुँचने की कि वो आए यहाँ पर। और इस समय 22 पावत से नीचे उतर रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ, और उसके बाद उनकी पौहंडी नंदी घोष उनके रथ पर जाकर समाप्त होगी, और उसके बाद आगे का कार्यकाल हमारे सामने, पूरा कार्यक्रम सामने होगा। ये देखिए एक विहंगम दृश्य, पूरा का पूरा जिसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने मानव महासमुद्र की उपमा दी है, उस पूरे बड़दंड का यह दृश्य था। यहाँ पर गोट्टीपुआ नृत्य करते हुए लोग, गोट्टीपुआ, महारी और ओडिसी, ये तीनों को देखें, या यहाँ की कला देखें, पटचित्रों को देखें, या यहाँ के आसपास के कि जितनी भी पुरानी इमारतों के आप दर्शन करें, मंदिरों के, उन सब में जो शैली आपको दिखलाई देगी, यहाँ तक कि यहाँ के पेंटिंग्स, यहाँ के भित्ति चित्रों का जो पूरा वांग्मय है, वो बहुत ही कलात्मक, और महाप्रभु जगन्नाथ उससे अछूते नहीं हैं। इनके पूरे मंदिर में कला का अद्भुत संयोग मिलता है। इस समय चारों तरफ बड़दंड पर लोगों का भीड़ पारावार चढ़ता हुआ, साधु, सन्यासी, भक्त, सब तरह के लोग यहाँ पर बनाटी खड़ा, यानी वो खेल के भी दृश्य आपको दिखलाई पड़ रहे होंगे। आगे का हाल अंग्रेजी में सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ अपने साथी सुभाष पाणी को। Their chariots
where they are being positioned. Positioning the deities for the journey is itself an important part of the ritual. This is called Rundha. As the deities come on Pahandi, at the back a frame is fitted especially for Lord Balabhadra and Lord Jagannath, because they are quite huge, and that is a process known as Sanapata Lagi, and they are tied with silken ropes. And a cloth covering of specified varieties is used to cover various limbs of the deities, and on top traditions you should have your clothes firmly tied to your bodies. It should hug your bodies. Then the bodies are themselves with this frame are tied to a frame at the back of the seats of their chariots. This is known as Rundha, and this Rundha process is in progress for Subhadra and Balabhadra. And since Lord Jagannath with his siblings and his Ayudha lives like a king in his royal palace, everything, all the arrangements have the trappings of a royal journey during Rath Yatra. And therefore, this will follow. This is from 10 miles around the temple, but these days, because of the availability of transport and convenience, people are traveling from all over the country and all over the world. Of course, the large crowds still come from around the temple town and also from Odisha, but you can see people coming from very, very far off source to Puri to witness the grandest festival on earth, that is Rath Yatra, and to have a glimpse of the dark darling, the name by which Lord Jagannath is addressed, Kaliya Dhano, an endearment of someone who is very dear, precious, as you address a small child, where a fire sacrifice is conducted just around the tree to sanctify the land. This is the tree, sacred log, from which you can see some of the symbols, and the tree is being bathed now with various items like ghee, scented water, and you can see the Daitas wearing the khandua and carrying the water, and a kind of a mahasnana is first carried out after the yajna. After this is actually shorter version of the yajna. The main yajna takes place little later, and you can see the preparations for the germination chamber which is being made, and the sprouts have come out. This is the main yajna sthali where the main yajna has taken place in all the Rath Yatra. You can see the panoramic view of the Bada Danda, just milling crowds, black heads, and because of the humidity and the oppressive heat, and you can see that the Vanajaga Jatra scenes which you saw was recorded earlier. The whole process took almost 3.5 months, and started on the day following the Ram Navami on Chaitra Shukla Dashami, and then it carried on for a long period of almost 100 days, and now the finale, grand finale of the Navakalavara is taking place, because the lords, the deities are appearing in their new bodies for the first time before the general audience. On the platform and watching the proceedings, watching the great festival of Rath Yatra, the festival of chariots, which is also known as the Ghosha Yatra, the Dasavatara Yatra, and a variety of other names. The Ghantwa Sevaks beating the gongs rhythmically, which always rises to a crescendo when a particular dramatic moment. The Vadagrahis of Jagannath, along with some of the other servitors proceedings onto the chariot, they have special role. They are the progenitors of the Vishwavasu, who is the original worshipper of Vishwavasu is of course the
original worshipper of the hunter tribe. It is the Daita Sevakas who worship Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Goddess Subhadra and Sudarshan, along with Madhava, who carries the memory of Nila Madhava, a shorter version of the icon of Lord Jagannath. You can see the fire service people, volunteers spraying water on the milling crowds here. Millions gathered, descended on this grand avenue, the Bada Danda, the wide road, the high street which stretches for about 3 kilometers from the Sri Mandira on the southern side to Shri Gundicha Temple. There was a dense forest around the temple. The temple itself is on a hillock, a rocky outcrop, the proof of which can be seen even today when you go inside the Ishaneswara temple on the northern side of the compound, just on the periphery of the inner compound and the outer edge of the outer compound, that is the inner edge of the outer compound, which is several feet below the present surface of the temple, main shrine. This of course is older, and Puri has a place of pilgrimage of great antiquity and a hoary past. Several temples of Shiva, the glimpse of Jagannath, they followed the ritual obsequies by first taking bath in the Markanda tank, and then this continued. They come back to the temple, wash their feet in water and then change their clothes and go inside to have a darshan. And this continues for several days. When after that, on the 10th day they have the tongue sharing with the heads, and on the 11th day there is a feast for the Brahmins and others. Jagannatha proceeding gently like a huge elephant. Hati Julaire Asibarabelo. He sways while coming out. Another poet has addressed him as a lion, and Krishna and the supreme divinity who synthesizes within him the faith of all strands. Therefore, it is the Jagannatha consciousness or Jagannatha faith which is so unique, and it is so dear, so inclusive, that all the other faiths get lost in the love for this dark lord, for the dark darling. Mothers treat him like a child, some treat him like a Sakha. The like of which you found in the life of Krishna. To Arjuna, he was a special type of servitors who know how to study the Lord from the back, how to study him from the sides by giving him support below his shoulders, and some pull him with silken rope from the front, others push him from behind, and still others hold him from a rope extending from the top frame little to his back, so that he doesn't tilt to a particular side or he doesn't stumble during his journey. And this itself is a process which requires great expertise. He is studied right now. And नई सदी 2015 के 9 कलेवर का वह वर्ष है जहां पर महाप्रभु जगन्नाथ अपने विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान सब कुछ नवीनता को धारण करके नवीनता का संदेश देने के लिए अपने श्री मंदिर का त्याग कर चुके हैं, और रथारूढ़ होने की तैयारी में उनके सेवायत, उनके सहयोगी और भक्तगण आपके सामने मॉनिटर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं दूरदर्शन की चर्चा यहाँ पर अवश्य करना चाहूँगा और बड़े ही गर्व के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि 29 मार्च 2015 को वन यज्ञ यात्रा आरंभ हुई थी। उसके पहले 23 मार्च से लेकर अब तक कुल 40 सीधा प्रसारण 9 कलेवर का दूरदर्शन दिखा चुका है। The pillar which you his prayers to Lord
Jagannath, Balabhadra, Subhadra and Sudarshan. There is a question about Chera Pahara. You will see this shortly after this Pahandi procession is over. That's the next important ritual. It will take a little while, and during that time you will get a answer to that. But Chera Pahara itself is the ceremonial cleaning or ceremonial sanctification of the surface of the chariot by the Gajapati king, with holding a golden handled broom and spreading water, sprinkled water mixed with sandalwood paste and other fragrant matter, flowers, and doing the ritual cleansing. Mukti Mandap and other people who are knowledgeable and who study the Beso, but it is now known as the Suna Beso. Puri is called the Sankha Khetra. Sankha means a conch. It is one of the ayudhas of the Vishnu and Jagannatha. The various the temples spread towards the ocean, which is on its east, and that gives you the rough idea of the conch shape. Jagannath actually touches the temple of Ardhashini, which is popularly known as Mausima temple, and goddess Lakshmi comes out and actually meets him on his return journey. But it is believed that this Jatra is essentially the triumph of the devotion of the simple devotees, and therefore God does not want to be diverted in any other way, and this is just a popular folklore explanation, though there is no formal explanation in any of the ancient texts indicating why exactly. But be that what may, goddess Lakshmi is the dearest to Lord Jagannath, and Lord Jagannath is also dearest to goddess Lakshmi, and they are the divine couple, and may their blessings be with all the devotees. धन्यवाद सुभाष। अभी दूरदर्शन की मैं चर्चा कर रहा था कि पहली बार सोशल मीडिया के साथ दूरदर्शन ने जोड़ा है अपने भक्तों को, और इस दौरान कम से कम 118 देशों के फेसबुक के हमारे जो जगन्नाथ भक्त हैं सीधे बातचीत कर रहे हैं। और इस क्रम में आप देख रहे हैं फिलहाल बड़दांड के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा के दौरान देते हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हर वर्ष करीब करीब कोई ऐसा वर्ष नहीं हुआ जबकि बारिश न हुआ हो। सस्य श्यामला धरती को एक पावन संदेश महाप्रभु जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा के दौरान देते हैं। दूरदर्शन ने 20 घंटे का एक अलग से कार्यक्रम बनाया 9 कलेवर के ऊपर, जिसका भी प्रसारण किया गया, और यहाँ तक कि नेशनल चैनल में भी हम लोगों ने इसको बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज लगभग 50 लाख श्रद्धालु भक्त इस 9 कलेवर रथ यात्रा को देखने के लिए पूरी धाम की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पर लगभग 30 लाख जगन्नाथ भक्तों के लिए इस जगन्नाथ संस्कृति से जुड़े हुए तत्व, मीमांसा और दर्शन के अंदर क्या क्या खास बातें हैं, तो हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे थे आपको कि पहली बार यहाँ पर नील माधव के रूप में विश्व वसु के द्वारा जगन्नाथ जी पूजे जाते रहे। उसके बाद अवंती नरेश ने पूर्ण दारू ब्रह्म के रूप में जिस साल 9 कलेवर 2 आषाढ़ पड़ा, 9 कलेवर का यह परंपरा शुरू की गई, और आज वह परंपरा श्री मंदिर देख रहे हैं, बड़दान पर देख रहे हैं। पूरी की कुल आबादी लगभग 4 लाख की, लेकिन आज 30 लाख से भी ऊपर भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे जितने भी कुंड पर देखने को मिल रही है, और यह व्यवस्था एक बार फिर अपने उन दर्शकों के लिए ज्ञातव्य होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी सवाल आया था, पूछा गया था कि जो भी यहाँ पर व्यवस्था हो रही है शंख क्षेत्र की बात, यह आकार है पूरी का शंख का आकार, इसीलिए इसको शंख क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। पूरी का अगर भौगोलिक आप स्वरूप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से शंख की आकृति में नजर आएगी। इसी तरह से आपने गजपति महाराज की चर्चा की थी, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा
कि स्कंद पुराण में जो सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं, उसमें उत्कल खंड है और उस उत्कल खंड में इस जगन्नाथ महात्मा और पुरुषोत्तम महात्मा का विस्तृत वर्णन है। और आज पूरी प्रशासन, पुरी का ये जो श्री मंदिर प्रशासन है, प्रदेश सरकार है, पुरी के गजपति महाराज हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, इन सबों ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि अब से जितनी भी व्यवस्था होगी पूरे विश्व के लगभग 4,000 जगन्नाथ मंदिरों में, वहाँ पर स्कंद पुराण के आधार पर पूरी रीति नीति के साथ है कि अब श्री जगन्नाथ पंचरात्र महोत्सव के दौरान पूरे विश्व को यह संदेश जाएगा कि यह कथा केवल एक दिन की नहीं होगी, बल्कि हर वर्ष, हर माह और हर दिन श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण की कथा की तरह यह जगन्नाथ महात्म्य भी पूरे विश्व के जगन्नाथ भक्तों को सुनाया जाएगा। मैं एक बार फिर अपने उन भक्तों को याद दिला दूं कि यह 9 कलेवर का वर्ष ऐसा वर्ष रहा जिसमें दूरदर्शन ने एक तरफ जो व्यापक इंतजाम किया, वहीं उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार ने भी पूर्ण सहयोग दे करके इसको यह अंजाम दिया है जो आज आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हर तरह का सहयोग, यही नहीं जितने भी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वे स्वेच्छा से पिछले 6 महीने से इस कार्य में लगे। एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक शिक्षक और एक एक प्रशासनिक अधिकारी अपना सब कुछ छोड़ करके इस कार्य में लगा हुआ है महाप्रभु की पावन रथ यात्रा को देखने में। उड़ीसा सरकार में श्री मंदिर तैनात है, उड़ीसा प्रदेश हर तरह से सहयोग कर रहा है। Minister for Petroleum, Government of India, who has been very instrumental in making and providing and extending all arrangements for the Navakalevara ceremony in the year 2015. So he is here, he was overseeing the arrangements here, and he is personally here not only to pay his obeisance to Lord, but also to oversee how the things they go all right. The sea of the crowd is getting thicker and thicker. I was talking about the Pahandi, and in Pahandi 2 important things are there. One is the gong beaters. The gong beaters, they beat in unison. It's a mesmerizing music that is produced, and most of these gong, and they stay here for about a month, and they do offer their services there. Once again, in the stand, the ministers and also some dignitaries, visitors to the state of Odisha. The sea of people that is getting thicker and thicker. I was talking about the first highlight of the Pahandi festival, the gong beaters, and the second highlight thing is that Tahiya. Now what exactly is Tahiya? They are the 4 floral crowns where some of the political leaders of the state and also of the country, they have come here to pay their ovations to Lord and also to pray for the welfare of the people. That is most important. Here nobody offers prayers for a selfish reason, but for prosperity to the self. But everybody comes here, including the Gajapati king, who is here or who would be here right after some rituals are over. He would be here invoking the blessings of Lord Jagannath for the entire world, because he belongs to the entire world. I was talking about the Tahiya, and the Tahiyas are prepared out of many things like flowers, bamboo sticks, cane, pith, and pieces of cloth. Odisha government's top brass, His Excellency the Governor Dr. S.C. Jamir is there, flanked on the left side by the Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. On this, sticks are used for the conical Tahiya for Goddess Subhadra, and 8 sticks for the conical Tahiya of Lord Sudarshan. 6 they would be using for the divine use there during the stay of during the stay at Gundicha Temple. So to continue further in some Swatsaham Aho Asmakam Bhagavan Tasya Davajavana Darshanam Jadyapi Janaihi na praptam Adhyeva Purnam Rupam Vilapyate Rath Yatrayam Navakalevarasya Yang Manuharini Rath Yatra Bhagavan Bhavati Prasanna Vadanah Katham Sarvan Sikhyati Ahi Manavaha Janah Sarvada Prasanna Vadanah Syat Na Kadapi Visanna Vadanah Prasanna Vadanah Sarvana Anandayati Bhagavan Tatha Prasanna Vadanah San
सर्वान् सानन्दं विलोकयति सानन्दं पश्यति अयि भक्ताः भवतां कृते अहं स्वस्थानं परित्यज्य स्वसिंहासनं विहाय सम्प्रति समायातः भवन्तः कष्टं सोढ्वा अत्र महति आतपे माम् अपेक्षन्ते अहमपि भवद्भिः सह तथोच्यते यस्य प्रदानं क्रियते केवलं भक्तानां भक्त्या सह ग्रहणाय तेन सार्धं तुषा निवारणाय एवं महती व्यवस्था सम्प्रति सर्वकारपक्षतः कृता दृश्यते जनानां आनन्दाय भगवान् आयाति नवकळेवरेण अतः लक्षाधिकाः जनाः एकत्रिताः भवन्ति पुरी नगरे श्रीक्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रे दशावतारक्षेत्रे कारणं किं कारणं भवति भगवन्तं नवीनेन रूपेण नवीन वपुषा नवीन भावनया सह दर्शनाय एवं तावत् राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पक्षतः अपि व्यवस्था कृता अस्ति भगवतः दर्शनं प्राप्यते एतत् दर्शनं न केवलं दृष्टिं हरति न केवलं आकर्षति भगवान् कृष्ण सह जीवस्य एवं तावत् सम्पर्कः वर्तते वयं पश्यामः सम्पूर्णं रथं सम्पूर्णस्य भगवतः जगन्नाथस्य रथः यत्र आरोहणं भविष्यति भगवतः जगन्नाथस्य तदर्थं यथा भक्ताः अपेक्षन्ते तथा सेवकाः अहो भगवतः नेत्रद्वयं रक्तम्भोरुह दर्पभञ्जन महासौन्दर्य नेत्रद्वयं महासौन्दर्यम् इदं नेत्रद्वयं यद्दर्शनाय सर्वे व्याकुलिताः भवन्ति तत्र किम् अस्ति अस्ति केवलं करुणां प्राप्नुवः नो चेत् यस्य भगवतः दर्शनाय देवाः अपि व्याकुलिताः मानवानां का कथा दर्शनाय सम्प्रति मानवाः सानन्दं पश्यन्ति भगवन्तं भगवान् अपि नेत्रद्वयेन एवं सहस्रनेत्रः भगवान् अत्र वयं पश्यामः तस्य चक्रनेत्रद्वयं सर्वं पश्यति कः किं करोति कः किं कामयते भगवान् जगन्नाथः जीवद्देवः तस्य पुरतः जह यादृशीं कामनां करोति तस्य सा कामना परिपूर्णा भवति सः यत्र कुत्रापि तिष्ठतु वयं पश्यामः भगवतः रूपं भगवतः मुखपङ्कजं दोलायमान। जैसे कुछ समय पहले यहाँ पे दारू यात्रा का वर्णन है। भूपतित होने के बाद दारू को पूरी लाया जा रहा है, जहाँ उत्तर द्वार से होकर ये कोयली वैकुंठ में रखा जाएगा और उसके बाद वहाँ पर रखा गया और मूर्तियों का निर्माण कार्य वहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सारे मार्ग में किस तरह से लोग दारू के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। इसके पहले जो नवकलेवर हुआ था, कल ही बस ऐसी चर्चा हो रही थी कि किसी को पता भी नहीं चल पाया था कि दारू किस रास्ते से होकर और कहां से आएगा, लेकिन मीडिया का बढ़ता प्रभाव और उसका साम्राज्य आज दारू का स्वागत हर एक जनपद में हर inner compound and then they will enter through a door which links the outer compound and to the Koili Vaikuntha. This is the view of the outer side of the northern entrance, and now you can see the Jagannath being taken in front. थोड़ी देर पहले शंख क्षेत्र की चर्चा हो रही थी। भौगोलिक रूप से पुरी का जो आकार है निश्चित रूप से शंख के आकार का है। साथ ही स्कंद पुराण वैष्णव खंड पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार गयासुर के वध के बाद महाविष्णु ने अपने आयुधों को संस्थापित किया उत्कल भूमि में। पांचजन्य शंख को उन्होंने पुरी में संस्थापित किया, क्योंकि यज्ञ और महायज्ञ में व्यष्टि और समष्टि का अंतर होता है। जहाँ पे व्यष्टि स्वार्थ के लिए या व्यष्टि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं वो मात्र यज्ञ होते हैं, लेकिन जहाँ पर लोक कल्याणार्थ यज्ञ किए जाते हैं वो महायज्ञ कहलाते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि का भेद यज्ञ को महायज्ञ से अलग करता है। तो ये जो वनयाग यात्रा है ये महायज्ञ है। 29 मार्च को जो जत्था निकला दैतापतियों का, जिस वनयाग यात्रियों का, जिसमें दैतापति थे, लंका सेवक थे, जिसमें स्रोत है, वो एक चिट्ठी भेजते हैं मंदिर प्रशासन प्रमुख के पास, जो मुख्य प्रशासक हैं काकटपुर मां मंगला मंदिर के, कि हम आना चाहते हैं मां की मार्जना नीति करने हेतु। और अगले दिन पूरे गाजे बाजे के साथ पूरे के पूरे मतलब वनयाग यात्रियों के जत्थे को ले जाया जाता है मां मंगला के मंदिर में
और वहाँ पे माँ की मार्जना नीति होती है। यहाँ पे हम सामने देख रहे हैं किस तरह से जन पारावार उमड़ा चला आ रहा है और जिसमें भक्ति पारवश्य में हर एक व्यक्ति अपने आप को जैसे भूल चुका है, भुला चुका है, लेकिन वहीं पर कुछ सजाग सेवक भी हैं जो सबकी जिम्मेदारी, सभी भक्तों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को लिए हुए, उन्हें सुरक्षा के घेरे में लिए के विषय में कि किस प्रदेश में विशेष दारू मिलेगा, चिन्हित होगा और उस विशेष दारू को चिन्हित करने के पश्चात उन्हें देखा जाता है और उनमें से निर्धारित करने के पश्चात वहाँ पर वनजात का प्रारंभ होता है। और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले भूमि शोधन होता है। भूमि शोधन के पश्चात उस भूमि के सभी जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने के